Good afternoon, everyone. Happy Friendship Day. Happy Friendship Day to everyone. कैसे आप सभी लोग? वेलकम बैक टू द चैनल. तो एक सेकंड में सेशन के लिंक शेयर कर देता हूँ. वेट वाइल आई विल शेयर द लिंक फर्स्ट एंड देन वी विल स्टार्ट. ओके. The chapter name is Large Number Around Us. Hello everyone. Happy Friendship Day. Good afternoon everyone. How are you all? आपको लाइव पे आना है, ठीक है? स्किप स्किप करके लाइव पे आ जाओ, फॉरवर्ड करके जल्दी से लाइव पे आ जाओ. Today we are going to discuss what is rounding off and what is estimate sum and estimate difference. Okay, both the things are important, and if you understand all these things, then it is definitely easy. We will wait for some time so that everyone could join the session. Please everyone like the session. All of you guys, please like the session, and if you haven't subscribed yet, please subscribe the channel. 8 people are watching and only 2 likes are there. Okay, so in this image, please observe the image and what you have find out in the image you have to tell me in the live chat. First of all, happy Friendship Day to everyone. Hi everyone, am I audible properly? Okay, so first observe the image and what you have seen in this image. Okay, the boy has purchased a sari for his mother and the price of the sari is 503 rupees. Okay, but how much money the boy give to the shopkeeper? How much money he has paid to the shopkeeper? 500. Okay, so what is 500? Why he hadn't paid the extra 3 rupees? Just because the shopkeeper or he paid only 500 just because he had made the प्राइस ऑफ दैट साड़ी इन राउंड फिगर. ओके, उसने उसको क्या किया, एक राउंड अप कर दिया, एक राउंड ऑफ कर दिया, एक राउंड फिगर में उसे कन्वर्ट कर लिया है. ठीक है, जैसे कि 503 की साड़ी थी तो उसने जस्ट 500 पे कर दिया है एंड शॉपकीपर ने भी 3 रुपए का उसको डिस्काउंट दे दिया, क्योंकि 3 रुपए इज द नेग्लिजिबल. ओके, 3 रुपए का डिस्काउंट वो दे ही सकता है. ठीक है, उसके पास चेंज नहीं थे तो शॉपकीपर ने उसे 500 देने के लिए ही कहा है. तो यही चीज अपन आज सीखने वाले हैं कि व्हाट इज राउंडिंग ऑफ. ओके, राउंडिंग ऑफ क्या होता है, यही चीज आज अपन सीखने वाले हैं. फॉर एग्जाम्पल, व्हाट इज राउंडिंग ऑफ. फॉर एग्जाम्पल, इफ आई हैव 729. ओके, for example, if I have 729 and the question asks you round off 8 to nearest 10. ओके, राउंड ऑफ 8 टू नियरेस्ट 10. तो राउंडिंग ऑफ करना मतलब क्या, राउंडिंग ऑफ करना मतलब उसे सिंपल लैंग्वेज में उसे एक राउंड फिगर में कन्वर्ट करना है. ठीक है, अगर एक नियरेस्ट 10 होगा तो नियरेस्ट 10 में उसे राउंड ऑफ करना है. नियरेस्ट 100 होगा तो नियरेस्ट 100 में उसे राउंड ऑफ करेंगे. अगर नियरेस्ट 1000 होगा तो नियरेस्ट 1000 में राउंड ऑफ करेंगे. इतनी चीज समझ में आ गई. ठीक है, अब और एक चीज यहाँ पे ध्यान रखना है कि जैसे अगर मैं कोई नंबर लिखता हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैं 20 लिखता हूँ, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. अब मुझे आप एक बात बताओ, 20 एंड 30 के एग्जैक्ट बीच में कौन सा नंबर लाया करता है?
ऑब्वियसली 25 लाई करता है, ठीक है। 25 लाइज एग्जैक्टली इन बिटवीन 20 एंड 30। वैसे ही अगर मैं ये 120 एंड 130 कंसिडर करूं तो एग्जैक्ट बीच में कौन सा नंबर लाई करेगा? 125 लाई करेगा। सिमिलरली अगर मैं इसे 1200 एंड 1300 कंसिडर करूंगा तो एग्जैक्ट बीच में कौन सा नंबर लाई करेगा? 1250, ठीक है, 1250। तो ये एग्जैक्ट बीच में लाई करने वाले नंबर्स है। अब एग्जैक्ट बीच में लाई करने वाले नंबर में कोई कॉमन नंबर आपको नजर आ रहा है क्या? ये जो मैंने बॉक्स में एग्जैक्ट बीच में लाई करने वाले नंबर दिए हैं, इनमें कोई कॉमन नंबर है? हाँ, बिल्कुल कॉमन नंबर है। यहाँ पे भी आपको 5 नजर आ रहा है, 125 में भी 5 नजर आ रहा है, एंड 1250 में भी 5 नजर आ रहा है। ओके, ऑल यू गाइज आर, एम आई ऑडिबल प्रॉपरली? Okay, whenever you have such type of numbers, always there is 5 in between them. Okay, एक नंबर यहाँ पे कॉमन आ रहा है जो कि क्या होता है, जो कि 5 होता है, ठीक है। तो इसीलिए कभी भी आप नियरेस्ट 10 करते हो, नियरेस्ट 100 करते हो, नियरेस्ट 1000 करते हो, तो आप ऑलवेज 5 के साथ कंपेयर करते हो, ठीक है। राउंडिंग ऑफ करना मतलब क्या? उसे राउंड फिगर में कन्वर्ट करना है। अब यहाँ पे गिवन है कि इसे नियरेस्ट 10 के साथ राउंड ऑफ करना है। अब नियरेस्ट 10 के साथ राउंड ऑफ करना है, इसे नियरेस्ट 100 के साथ राउंड ऑफ कर सकते हो आप। 100 के साथ एंड 1000 के साथ क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि यहाँ पे मैक्सिमम हाईएस्ट प्लेस वैल्यू क्या है? मैक्सिमम हाईएस्ट प्लेस वैल्यू इस नंबर की 729 की 100 है। तो इसे मैक्सिमम आप नियरेस्ट 100 तक राउंड ऑफ कर सकते हो, ठीक है। उससे ज्यादा नहीं, 1000 तक नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पे 1000 प्लेस वैल्यू ही नहीं है। एंड और मैंने नेक्स्ट चीज क्या बताई थी? नेक्स्ट चीज ये बताई थी कि वाई वी ऑलवेज कंपेयर विथ 5, बिकॉज 5 लाइज इन बिटवीन एनी टू नंबर्स सो दैट वी कुड राउंड ऑफ दैट नंबर इजीली। ओके, अगर राउंड ऑफ करना है मतलब क्या करना है? राउंड ऑफ करना है मतलब एक तो अपन उसे 20 बनाएंगे, या फिर एक तो अपन उसे 30 बनाएंगे, एक तो अपन उसे 120 बनाएंगे, या फिर एक तो उसे अपन 130 बनाएंगे, अगर वो नंबर इन दोनों के बीच में लाई करता है तो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर मान लेते हैं कि वो नंबर 122 है, अगर वो नंबर 122 है तो उसे किसके पास राउंड ऑफ करेंगे आप? राउंड फिगर में 120 के पास कन्वर्ट करेंगे। अब 122 है तो आप 130 तो नहीं पे करोगे ना। अगर कोई आप चीज खरीदने गए मार्केट में, वो 120 रुपीज की है, तो आप कितने पे करोगे शॉपकीपर को? 130 पे करोगे क्या? नहीं, आप उसे 120 पे करोगे, ठीक है, 120 पे करोगे। अब आप ये डिसाइड कैसे कर रहे हो कि 120 पे करना है कि 130? 5 बीच में है, एंड 5 के पहले ही नंबर आता है ये 122, 125 के पहले नंबर आता है, इसलिए आप 120 पे करोगे। अगर कोई चीज है 1210 की चीज है, वो 1210 की चीज है, तो आप उसे 1300 पे करोगे क्या? बिल्कुल 1300 पे नहीं करोगे। आप उसे कितने पे करोगे राउंड फिगर में? 1200 पे करोगे, ठीक है, 1200 पे करोगे। ये कैसे डिसाइड किया आपने? आपने ये ऐसे डिसाइड किया ना कि उसके एग्जैक्ट बीच में क्या आता है? 1200 एंड 1300 के बीच में 1250 आता है। अब 1250 अगर एग्जैक्ट बीच में आता है तो ये 1210 है, वो 1250 से छोटा है, ठीक है, 1250 से छोटा है। इसका ही मतलब अपन उसे 1200 तक राउंड ऑफ कर सकते हैं। मतलब आप बोल सकते हो कि 1210 की चीज है तो 10 रुपए का डिस्काउंट दे दो। तो इसीलिए यहाँ पे 5 एक इंपॉर्टेंट नंबर है। 5 ऑलवेज मिडल में आ रहा है। इन तीनों नंबर में क्या कॉमन नंबर दिख रहा है? 5 कॉमन दिख रहा है, तो इसीलिए अपन 5 के साथ कंपेयर करेंगे। सेकेंड पॉइंट बस इतना ध्यान में रखना है, ठीक है। ये एज इट इज रहने देते हैं, बाद में काम आ सकता है। तो नंबर क्या था? 729। अब 729 को मैंने क्या बोला था? 729। 729 में हाईएस्ट प्लेस वैल्यू क्या है? हाईएस्ट प्लेस वैल्यू यहाँ पे 100 है, 7 है, ठीक है। 100 प्लेस वैल्यू यहाँ पे हाईएस्ट है, 100 प्लेस यहाँ पे हाईएस्ट है, तो इसीलिए मैक्सिमम इसे नियरेस्ट 100 या फिर उसके नीचे नियरेस्ट 10 तक आप राउंड ऑफ कर सकते हो। तो सबसे पहले अपन देखेंगे कि नियरेस्ट 10 तक राउंड ऑफ कैसे किया जा सकता है। अब देखो, अगर क्वेश्चन में गिवन है कि राउंड ऑफ दिस नंबर टू द नियरेस्ट 10, अब 10 के लिए राउंड ऑफ करना है तो आपको यहाँ पे वो नंबर फिर से एक बार लिख लेना है, ठीक है, आंसर में। अब नियरेस्ट 10th प्लेस पे राउंड ऑफ करना है, तो 10th प्लेस कौन सी है? यहाँ पे 2 है, तो 2 के ऊपर मैं थोड़ी एक मार्किंग कर लेता हूँ, ठीक है, 2 के ऊपर मैं यहाँ पे एक डॉट निकाल लेता हूँ।
अब always remember that you have to compare the previous place of dot digit. And which is the previous place of dot digit? Once, right? Dot digit is at tens place, to which is the just previous place of dot digit? Once. So always remember that compare the previous place with 5. Many student compare 2 with 5. 2 is less than 5. It is the wrong thing. Okay. You have to compare the just previous digit with the 5. So I will write here ones place or once digit. One's digit is 9. Since now compare 9 with 5. Since 9 is greater than 5. Okay. So there are three possibilities. The number, for example, if suppose the number is A. Here the number is 9, but if suppose the number is A, the number A could be greater than 5. The number A could be equal to 5 or the number A could be less than 5. देर आर थ्री पॉसिबिलिटी. कंपेयर करते समय तीन ही पॉसिबिलिटी होते हैं. एक तो वो ग्रेटर होगा, एक तो इक्वल टू होगा या फिर एक तो लेस होगा. अब देखो अगर वो ग्रेटर है तो मैं एक रूल बता देता हूं. एड वन इन डॉट डिजिट. एड वन इन डॉट डिजिट. एड वन इन डॉट डिजिट. अगर वो ग्रेटर है या फिर इक्वल टू 5 है तो एड वन इन डॉट डिजिट. ये चीज यहाँ पे ध्यान रख लो कि अगर वो ग्रेटर है या फिर इक्वल है तो एड वन इन डॉट डिजिट. एंड अगर वो लेस देन 5 है, ठीक है, अगर वो लेस देन 5 है तो कीप द डॉट डिजिट एज इट इज. कीप द डॉट डिजिट. कीप द डॉट डिजिट एज इट इज. ओके. अब ये चीज कर लेनी है. अगर वो नंबर ग्रेटर है 5 से या फिर 5 के इक्वल है तो ऐड वन इन डॉट डिजिट. 5 से लेस है तो कीप द डॉट डिजिट एज इट इज. एंड लास्ट स्टेप आपको एक रिमेंबर रखनी है कि जितने भी प्रीवियस डिजिट है उसे जीरो करना है. कन्वर्ट ऑल प्रीवियस डिजिट्स टू 0. ये दोनों केस में काम आएगा. ठीक है. यहाँ पे जो केस नंबर 1 बताई है मैंने एंड ये केस नंबर 2 बताई है, इन दोनों केस में ये चीज काम आएगी. फॉर एग्जांपल अभी एग्जांपल से ज्यादा समझेंगे. ठीक है. यहाँ पे क्या था? सिंस 9 इज ग्रेटर देन 5. अब ग्रेटर है तो एड वन इन डॉट डिजिट. अब एड वन इन डॉट डिजिट तो ये क्या हो जाएगा? 229. 229 राउंडेड ऑफ टू. एड वन इन डॉट डिजिट मतलब क्या हो जाएगा? 2 में मैं 1 ऐड करूंगा. 2 में 1 ऐड करूंगा तो ये क्या हो जाएगा? 73. एंड ऑल द प्रीवियस डिजिट विल बी 0. सो आंसर विल बी 730. ठीक है. All the after digit will be as it is. You just have to convert the previous digit to 0. And dot digit का previous digit क्या था guys? यहाँ पे 9 था तो 9 को 0 convert कर लिया. ठीक है. सभी लोगों को समझ में आ गया? Everyone, all you understood? We have round off it to nearest 10. Okay. We have round off it to nearest 10. आप ऐसे भी लिख सकते हो rounded off to and नीचे nearest 10. Nearest tens. Okay. This number you have rounded off to nearest tens. Okay. अब यही अगर आपको क्वेश्चन में होगा कि 729 आपको राउंड ऑफ करना है इस नंबर को नियरेस्ट 100. ओके. यहाँ पे वर्ड्स में लिख लेते हैं ताकि बेटर अंडरस्टैंड हो जाए. You have to round off this number to nearest 100. So first step is what? Mark the 100th digit. Okay, 729. Which is the 100th digit? 7. So I have applied the dot on. I have applied the dot on marking on the 100th digit. What is the next step? Just check the previous place. Okay, so you have to write here. And which is the previous place? Tell me in the comment section, live chat. Which is the just previous place? Ones or tens or 100? The just previous place is, tell everyone, which place we are going to find out tens. Very good. So here tens digit is 2. Now since 2 is less or greater, 2 is less than 5. And
I had told you in the previous slide why we always compare with 5, because whenever we round up the number, somewhere 5 comes in the middle. Okay, everyone, are you understanding? So 2 is less than 5. So if 2 is less than 5, so which rule will be applied? If 2 is less than 5, then keep the dot digit as it is, and all the previous will be 0. All the previous of dot digit will be 0. So keep the dot digit as it is. Which is the dot digit? 729 rounded off to 729 rounded off to nearest tens, rounded off to nearest 100, rounded off to nearest 100, and dot digit is 7. So keep the dot digit as it is, and all the previous will be 0. That is 0, 0. 700, not 730, Rahul. Okay, all you guys understood? Keep the dot digit as it is, and all the previous will be 0. And previous, how many digits are there in the previous of dot digit? 2. So I have applied it 2 zeros. Okay, all you guys understood? Okay, so now we will take a larger number for better understanding. Suppose we have 2359. Okay, so first we will round up it to nearest 10. Nearest tens. So mark the tens digit. Okay, mark the tens digit. So I will write here, check the just previous digit. Just previous digit is ones. So here once a digit is 9. Okay, and since 9 is greater than 5, if 9 is greater than 5, add 1 in dot digit. So 2359 rounded off to 2359 rounded off to nearest tens, if suppose it is greater than, if suppose this number 9 is greater than 5, then add 1 in dot digit. Add 1 in dot digit and you will get 2, 3, 5 will become 6. Okay, I have added 1 in dot digit, and all the previous digit will become 0. All the previous digit will become 0, and it will be 2360. Okay, all you guys understood? Don't get confused in between comparing with 5. The digit you are comparing with 5 is always the previous place of the dot digit. Okay, many students are comparing the dot digit with 5. Not. You have to compare the previous digit with 5. Okay, so we will take the same example so that you will find the difference, how the number could round up to nearest tens, nearest 100. Okay, so now we will round up this number to nearest 100. Okay, so what is the first step? Mark the 100 place. 100 place is 3. So I have marked the place as 3. Okay, so I will just check the previous place of the dot digit. Previous place of the dot digit is 5. So here, and 5 is at tens place. So here tens digit is 5. Here the tens digit is 5. And since 5 is equal to 5, and if suppose 5 is equal to 5, then also you have to add 1 in dot digit. Okay, in only if suppose a is less than 5, at that time only you have to keep the dot digit as it is. And if a is equal to 5 or a is greater than 5, you have to add 1 in dot digit. So therefore 2359 rounded off to, therefore 2359 rounded off to, add 1 in dot digit. Dot digit is 3. So 3 will become 4 and all the remaining will be 0. Okay, so it has rounded off to 2400.
Yes, everyone, all you guys are understanding? Okay. So you have to now tell me 2359. Can I round off it to nearest thousand? Can I round off it to nearest thousand? Yes or no? Yes, very good. Because in this number, the highest place value is 1000. So now tell me, can I round off it to nearest 10,000? Yes or no? Can I round off this number to nearest 10,000? How yes? Is there any 10,000 place present in the number? Very good. So that's why the answer will be no. Okay? The answer will be no. Because the maximum highest place value in this number is 1000. So we could round off it to nearest 1000. Okay? Okay. So we will round off this number to nearest 1000. So what is the first step, guys? The first step is mark the 1000 place. 2359. Mark the 1000 place. 2 is at the 1000 place, right? Okay. So I will write here which place I will take here? 1000, hundred, tens or unit? Ones. Which place I will take here? 100. Because 100 is just previous place to dot digit. So here 100 digit is 3. And since 3 is less than 5, if 3 is less than 5, keep the dot digit as it is. So 2359, keep the dot digit as it is. 2359 rounded off to nearest 1000, and it will become keep the dot digit as it is means keep 2 as it is, and all the rest will be 0. All the previous digit will be 0. Okay? Okay. All you guys are understanding how I am rounding off the number? Okay, so now we will take a little bit large example. Wait a minute. I will take from the textbook. Okay. Now consider the another example, and the another example is 4,34,925, and you have to round off it to nearest 10,000. Round off it to nearest 10,000. What will it become? First step is write the number as it is, 434,925. Mark the 10,000 place. The 10,000 place is 3. I have marked the 3. So I will write here, which is the just previous place of the dot digit. Which is the just previous place of the dot digit? 1000. So here, thousands digit is equal to 4. And since 4 is less than 5, if suppose this number is less than 5, keep the dot digit as it is. So I will keep the dot digit as it is, that is 4 and 3. Okay. I have keep the dot digit as it is, that is 4 and 3. And change the previous digit to 0. There are 4 previous digit to dot digit. So I will convert all the digit to 0. That is 0, 0, 0, 0. Okay. And it has become 4,30,000. So rounded off to nearest 10,000 is this number I have rounded off to nearest 10,000. All you guys understood? Yes? Okay.
So here it was given that we have to round off it to nearest 10,000. Everyone understood how to round off the number? Yes, very good. Okay. So now we will see what is estimate. Now we will see what is estimate. Estimate sum and estimate difference. Okay. So always remember one rule, that whenever you have to estimate that number to the highest place value of smallest number. For example, if I write 729 and if I write 1359, okay, you have to do the estimate sum of this number. Okay, we will take this example number 1. So which is the smallest number in comparison with these two number? Obviously 729 is the smallest number, okay, as compared to both number. So which is the highest place value of the smaller number? Which is the highest place value of smaller number? Tell everyone. The highest place value of smaller number is 100. Okay. The highest place value of smaller number is 100. Very good. So that's why we will round off both the number to nearest 100. In estimate sum and estimate difference, always remember that we will round off both the number to same highest place value. To same highest place value. ऐसे नहीं करना है कि यहाँ पे 729 में मैक्सिमम हाईएस्ट प्लेस वैल्यू 100 है, ओके, एंड यहाँ पे 1359 में मैक्सिमम हाईएस्ट प्लेस वैल्यू 1000 है, ठीक है। यहाँ पे मैक्सिमम हाईएस्ट प्लेस वैल्यू क्या है? 1000 है, तो इसको 1000 हाईएस्ट 1000 के साथ राउंड ऑफ कर लो, इसको हाईएस्ट 100 के साथ राउंड ऑफ कर लो, ये गलत है, ठीक है। दोनों को सेम हाईएस्ट प्लेस वैल्यू के साथ राउंड ऑफ करना है। अब ये कौन डिसाइड करेगा कि कौन सी सेम हाईएस्ट प्लेस वैल्यू रहेगी? स्मॉलर नंबर विल डिसाइड. Smaller number has highest place value 100. So we will round off both the number to highest 100. Okay. All you guys understood this? Smaller number will decide that we have to round off this number to which place value. Okay. I will also tell the estimate multiplication as well, but addition and difference we will check first, and then I will tell you estimate difference as well. Okay. Okay. So the same highest place value must be there. So here I will write in 729, or simply you have to write one line here. Okay. The smallest number has the smallest number has highest place value. The smallest number has highest place value 100. So round off both the number to nearest 100. Round off both the number to nearest round off both the number to nearest 100. Okay. So now in 729, comma, mark the 100 place. Which is the 100 place? 7. Okay. So here check the just previous place to dot digit. Here the tens digit is 2, and since 2 is less than 5, so this number is rounded off to
Therefore, rounded off to keep the dot digit as it is and all the previous digit will be 0. This number is rounded off to 700. Okay. Now, in the next number in 1359, mark the 100 place. Why 100 place? Because we are rounding up it to nearest 100. Okay. So here, which is the just previous digit of the dot digit? Here, tens digit is 5. And since, एक सेकंड में चार्जिंग लगा देता हूँ. And since 5 is equal to 5, therefore we will round it off to add 1 in dot digit, that is 3 will become 4 and all the remaining digits will be 0. Previous 0 नहीं करना है. 3 के पहले previous आफ्टर डिजिट कौन सा है? आफ्टर डिजिट 1 है, तो 1 को 0 मत करना. जस्ट प्रीवियस डिजिट यू हैव टू कन्वर्ट इट 0. समझ में आ गया सभी लोगों को? तो फाइनल लाइन यू हैव टू राइट एस्टिमेट सम is equal to, which are the estimate sum, which are the two rounded off number, 700 and 1400. So estimate sum will become 700 and 1400 and it will become 2100. Okay. Okay. All you guys understood this question? If suppose number of digits are same, for example, 759 and 432, the digits are same. Okay. So here what we will write? Both the digit has highest place value 100. So we will round up both the number to nearest 100. Okay. So now we will take a few examples from the textbook. एस्टिमेट की एग्जांपल्स लेते हैं. हाँ, ये एग्जांपल लेते हैं. एग्जांपल नंबर सी, एग्जांपल नंबर 20 इन टेक्स्ट बुक on page number 24. The population of Kolkata in March 2025 was about, in March 2025 the population is 1 crore 58 lakh 1 crore 58 lakh 45,219. Okay. Round up this population figure to nearest 10 lakh. We have to round up this to nearest 10 lakh. Okay. We have to round up this number or population to nearest 10 lakh. How we are going to write this? The population of Kolkata in 2025 population of Kolkata in 2025 is, write the number exactly as it is. Okay, this much population is of the Kolkata in 2025. So we have to round up it to nearest 10 lakh. Okay, so first mark the 10 lakh place value. Which is the 10 lakh place value? 5 is at 10 lakh place. Okay, 5 is at 10 lakh place. So someone has compared, okay, 8 with 5. Very good. So here, which is the lakhs place, which is the just previous place?
lakhs. So here lakhs digit is 8, and since 8 is greater than 5, okay, so this number rounded off to if 8 is greater than 5, add 1 in dot digit. So we will add 1 in dot digit is 5, so we will add 1 in 5, that is 5, 6, and all the rest will be 0. Okay, it will become 1 crore 60 lakh. It will become 1 crore 60 lakh. Everyone understood? Everyone understood the question? Okay, in the next question, we will see the estimate sum of 421 plus 167. Okay, so you have to tell me, we will round up both the number to nearest. We will round up both the number to nearest. Both the number has highest place value as 100. So round off to nearest 100. In 421, mark the 100 digit. Here the tens digit is, here the tens digit, अगर ये 2 मार्क के लिए आता है तो इतना नहीं लिखना है, ठीक है। अगर ये 4 मार्क 5 मार्क के लिए आता है तो लिखना है। Here the tens digit is 2, and since 2 is less than 5, keep the dot digit as it is. Therefore rounded off to 400. Keep the dot digit as it is, and dot digit was 4, so I have kept the dot digit as it is. Okay, and all the previous digit will be 0. And 167, mark the 100 place. Here tens digit is 6, and since 6 is greater than 5, okay, so add 1 in dot digit. So this rounded off to, add 1 in dot digit means 1 will become 2 and rest will become 0. So the estimate sum will be 400 plus 200, 600. Okay, all you understood? Okay, so we will see another example. 7,345 plus 15,893. We have to do the estimate sum. Solve करना चालू कर दो everyone. The first line is important. The smallest number has highest places up to which places the smallest number has highest place? 1000. Very good. The smallest number has highest place value up to 1000. So round off both the number to nearest 1000. So round off to nearest
1000. So the first number is 7345. Round up to nearest 1000, so mark the 1000 digit. Here the 7 is the 1000 digit, so apply the dot on 1000 digit. Okay, first step is apply the dot on 1000 digit. Second step is here, which is the just previous digit or just previous place, 100. Here hundreds digit is 3, and since 3 is less than 5, keep the dot digit as it is. If 3 is less than 5, then keep the dot digit as it is. It means that rounded off to, therefore this number rounded off to, keep the dot digit as it is, means 7 is the dot digit, 7 will be as it is, and it will be rounded off to 7000. All the remaining rest will be 0. All the previous digit will be 0. So I have rounded off this number to nearest 1000 and it has become 7000. Okay, it has become 7000. किसी को डाउट है यहाँ पे? समझ में आ गया? सभी लोगों को समझ में आ गया ये? ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं. अब ये 15,893 को राउंड ऑफ करना है. In 15,893, which is the 1000 place 5. Okay, so here, and which is the just previous place of the 1000 place, 100. Here the hundreds digit is 8. इतना आ गया तो पूरा चैप्टर ही आ गया. 100 digit is 8. मतलब ये पूरी फोर्थ एक्सरसाइज ही आ गई. एंड सिंस 8 is greater than 5, add 1 in dot digit. If suppose this number is greater than 5, add equal to 5 or greater than 5, then add 1 in dot digit. So rounded off to, therefore this number rounded off to, add 1 in dot digit means 1, 5 will become 6 and rest digit will become 0. So I have rounded off this number to nearest 1000 and it has become 16,000. Okay, so what will be the estimate sum? Estimate sum will be addition of these two round figure. Okay, addition of this round figure and addition of this round figure will be 16,000 plus 7,000, it will be 23,000. So estimate sum is equal to 16,000 plus 7,000 and it will become 23,000. Okay, ठीक है. एक्सरसाइज स्टार्ट करें एवरीवन. ठीक है, अब ये इसे पूरे मेथड के साथ मैं नहीं सॉल्व करके दिखाऊंगा, बट आपको ये मैं करने के लिए देता हूं. 7,78,345 प्लस 4,23,975. Okay, so you have to tell me what will be the answer. You have to do this estimate sum. Hmm, 7,000 has become, हाँ, 8 lakh and 4 lakh. 8 lakh and 4 lakh, it will become, estimate sum will become 12 lakh. Okay, and why this number has become 8 lakh? Because both the number has highest place value up to lakh. So we will round up it to nearest lakh. Okay, so I will mark both the digits to nearest lakh. अब ये टाइम नहीं है इसलिए मैं ऐसे सॉल्व कर रहा हूं, बट आपको जैसे प्रीवियस के क्वेश्चन सॉल्व करके बताए थे वैसे सॉल्व करना है. ओके, तो देखो यहाँ पे which is the just previous digit, 7, and since 7 is greater than 5,
add 1 in dot digit, 7 has become 8 and all the rest has become zeros. Okay, all the rest has become zeros. Similarly, in 4 lakh, which is the just previous place of the dot digit, 2, that is 10,000. So 2 is less than 5. Keep the dot digit as it is. I have kept the dot digit as it is and all the rest has become 0. समझ में आ रहा है सभी लोगों को? ओके, अब देखते हैं एस्टिमेट डिफरेंस. अब एस्टिमेट डिफरेंस में पूरी प्रोसेस सेम है जैसे अपन यहाँ पे एस्टिमेट सम करते थे. जैसे अब यहाँ पे अपन एस्टिमेट सम करते थे, इन दोनों राउंड फिगर का एडिशन करते थे. अब सबट्रैक्शन करना है, बस ये वाली स्टेप चेंज होगी. बाकी की जितने भी स्टेप है वो एज इट इज है. एस्टिमेट डिफरेंस में बाकी के जितने भी स्टेप है वो एज इट इज है. ओके, तो एक दो एग्जांपल एस्टिमेट डिफरेंस के भी कर लेते हैं, फिर अपन एक्सरसाइज ज्यादा बड़ी नहीं है इसलिए मैं सॉल्व एग्जांपल वगैरह मन से एग्जांपल ज्यादा दे रहा हूं. ठीक है, कलर ऑरेंज कर लेते हैं. एस्टिमेट डिफरेंस. एस्टिमेट डिफरेंस. अब एस्टिमेट डिफरेंस में भी क्या कुछ एग्जांपल देते हैं एंड एग्जांपल से ही सीखते हैं. रूल्स वही है, बस आपको एंड में डिफरेंस करना है. जैसे कि 14,25,715. ठीक है, इसका आपको डिफरेंस करना है 7,53,925 के साथ. ठीक है, करके देखो, सॉल्व करके देखो क्या है. स्मॉलर नंबर कौन सा है? 14 लाख स्मॉलर नंबर है कि 7 लाख स्मॉलर नंबर है? 7 लाख स्मॉलर नंबर है. ठीक है, तो स्मॉलर नंबर की हाईएस्ट प्लेस वैल्यू स्मॉलर नंबर की है lakh. So we will round up both the number to nearest lakh. That's why I am asking you to apply the marking or dot on the place that we have to round off. Okay. ठीक है, तो यहाँ पे अपन ऐसे सॉल्व कर सकते हैं. इन 14,25,715 we will round up both the number to nearest lakh. You have to write that line. The smallest number has highest place value lakh, so we will round up both the number to nearest lakh. Okay, here you have to write that line. Now here, which is the just previous place of the lakh place? 10,000. Here the 10,000 digit is 2, and since 2 is less than 5, ये जब आप ये पूरी प्रोसेस स्टेप लिख के करोगे, तो प्रैक्टिस में ऐसे पूरे स्टेप लिख के करोगे तो एक टाइम के बाद आपको डायरेक्टली राउंड ऑफ केस में करना है, समझ में आ जाएगा. ठीक है, तो इफ 2 is less than 5 then keep the dot digit as it is and it will be rounded off to keep the dot digit as it is, that is 1 4, and all the previous digit will be 0. It will rounded off to 14 lakh. Okay, it will rounded off to 14 lakh. The second number is in 7,53,925. The number we are rounding up to nearest lakh. Okay, so here, which is the just previous place of the lakhs place? 10,000. Here 10,000 digit is equal to 5, and since 5 is equal to 5, so add 1 in dot digit. So this number rounded off to, this number will be rounded off to, add 1 in dot digit and it will become 8 and all the rest will become 0. Okay, and it will become 8 lakh. So first number has rounded off to 14 lakh, second number has rounded off to 8 lakh. So estimate difference
estimate difference is 14 lakh minus 8 lakh, and it will become 6 lakh. समझ में आ गया गाइस सभी लोगों को? स्टूडेंट्स, समझ में आ गया कैसे करना है एस्टिमेट सम एंड एस्टिमेट डिफरेंस? यस और नो? ओके, तो यहाँ पे अभी कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, एक्सरसाइज के 1D एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, फिर अपन यहाँ पे ये एक्सरसाइज खत्म कर लेंगे एंड ये चैप्टर भी अपना खत्म हो जाएगा। अब एक्सरसाइज के क्वेश्चंस थोड़े मैं डायरेक्टली सॉल्व करूंगा, इतना नहीं लिखूंगा, बट आपको सिस्टमेटिक वे में लिखना है, जैसे अभी लिख के बताया था मैंने प्रॉपर। तो फर्स्ट एग्जाम्पल में आपको क्या करना है, एस्टिमेट सम करनी है। 1314 प्लस 272, ठीक है? बताओ आंसर जल्दी जल्दी से, क्या आएगा इसके आंसर? लिखना आपको प्रॉपर है, जैसे अभी तक मैंने बताया था। द स्मॉलेस्ट नंबर हैज हाईएस्ट प्लेस वैल्यू। The smallest number has highest place up to 100. स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है? 272। 272 की हाईएस्ट प्लेस वैल्यू क्या है? हाईएस्ट प्लेसेस कहाँ तक है उस नंबर में? 100 तक है। तो वी विल राउंड ऑफ बोथ द नंबर टू नियरेस्ट 100। ओके, तो इन 1314 100 digit is 3, here tens digit is 1 and 1 is less than 5. Okay, since 1 is less than 5, so this number will be rounded off to 1300, right? And the next number is 272, rounded off to nearest 2, and since this nearest 100, since the previous digit is 7, 7 is less than 5, so if 7 is less than 5, then rounded off to, sorry, 7 is greater than 5, then we will round off to this number to 300. Add 1 in dot digit and it will become 300. So 1300 plus 300, it will become 1600. आंसर कैसे लिखना है? आंसर प्रॉपर ही लिखना है, जैसे अभी तक अपन ने आंसर लिखे थे। यहाँ पे जैसे अपन ने आंसर लिखा है प्रॉपर, या ऐसे प्रॉपर आंसर लिखना पड़ेगा, ठीक है? अब प्रैक्टिस कर रहे हैं इसीलिए थोड़ा डायरेक्ट डायरेक्ट में लिख रहा हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको ही करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 33,278 प्लस 1902। The smallest number has highest place value up to the smallest number is 1902. It has highest place value up to 1000. So we will round up both the number to nearest 1000. So I will mark the dot on 1000 digit. So in 33,278, I have marked the dot on 1000 digit. Here, the previous digit is less than 5. So it will become 33,000. Okay. But आपको लिखना पड़ेगा. Okay. Here 100 digit. Previous digit of the dot digit is 100. So 100 digit is 2.
Since 2 is less than 5, keep the dot digit as it is. So rounded off to keep the dot digit as it is, that is 33000. So it will be the rounding off of 33,278. And the next number is 1902. We have to round up it to nearest 1000, which is the just previous digit of 1000, 100. And since 100 digit is less greater than 5, so add 1 in dot digit. So if I add 1 in dot digit, 1 will become 2 and rest will become 0. So it will become 2000. So what will be the estimate sum? Estimate sum will be 35,000. Okay. Final line you have to write. Don't write directly. So try to solve the third question. Okay. After the session, we will see the question number 2. The first example, 27,348 minus 1267. We have to do the estimate difference in this question. लगभग हमने 8 से 10 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, एस्टिमेट सम, राउंडिंग ऑफ के वगैरह। तो अगर फिर भी किसी को डाउट है तो फिर से एक बार ये रिकॉर्डिंग 2x पे देख सकते हैं, ठीक है। एंड ये 4th क्लास है, 4th है कि थर्ड, नहीं 3rd ही क्लास है ये। तो एक प्लेलिस्ट में बना लूंगा ये 3 क्लासेस की, मतलब पूरा चैप्टर आपको एक ही जगह पे मिल जाएगा। द आंसर इज we will round up both the number to nearest 1000 because smallest number has highest place value 1000. So here the 1000 digit is 7. So it will be rounded off to 27,000. Why? Because the just previous digit is 3. Just previous digit of dot digit is 3 and 3 is less than 5. Keep the dot digit as it is. That is 27 and all the rest will be 0. Here the just previous digit is 2 and 2 is less than 5. Again keep the dot digit as it is and it will become 1000. So estimate difference will be 26,000. Estimate difference will be 26,000. ओके, लिखना कैसे वो मैंने आपको पहले ही बता दिया है। सिस्टमेटिक वे में कैसे लिखना है, सिस्टमेटिक वे में आपको ये ऐसे लिखना है, ठीक है। सिस्टमेटिक वे में आपको ऐसे आंसर लिखना है। सभी को समझ में आ गया ना आंसर कैसे लिखना है? ये भी नहीं है, एक सेकंड ऊपर, हाँ ये वाला, ऐसे आपको सिस्टमेटिक वे में आंसर लिखना है। ये लाइन लिखनी है कि द स्मॉलेस्ट नंबर हैज हाईएस्ट प्लेस वैल्यू अप टू 1000, सो वी विल राउंड ऑफ बोथ द नंबर टू नियरेस्ट 1000। तो ये 100 डिजिट क्या है यहाँ पे दोनों जगह पे, एंड वो लेस देन 5 है, इसीलिए अपन यहाँ पे राउंड ऑफ में क्या रूल्स अप्लीकेबल कर रहे हैं वो समझ में आ जाना चाहिए, ठीक है। अब एस्टिमेट डिफरेंस का ही और एक एग्जांपल देख लेते हैं। 26,895 माइनस 16,292, ओके। 26,895 minus 16,292. You have to do the estimate difference of these two numbers.
क्या आएगा आंसर? We will round off both the number to nearest 10,000 because both the number has maximum place value to nearest 10,000. Okay. So 26895 will be rounded off to nearest 10,000 and it will become dot digit is 2, just previous digit is 6, and since 6 is greater than 5, add 1 in dot digit and all the rest will be 0. It will be rounded off to 30,000. Okay. Again, 16292, the highest place value is 10,000 and we are rounding off to nearest 10,000, and after rounding off this number will become, which is the just previous digit of dot digit? 6, and 6 is greater than 5. 6 is greater than 5. So add 1 in dot digit. It will become 20,000. And what will be the estimate difference? 10,000. Okay. Proper answer I have provided in the previous questions. यहाँ पे अपन डायरेक्ट लिख रहे हैं. Rounded off to nearest 10,000. ठीक है, अभी जो वर्ड प्रॉब्लम है वो कर लेते हैं एक्सरसाइज के. Arpit bought a car. Example number 3 of the exercise. Arpit bought a car for 7,78,415 and an apartment of 75,45,900. Estimate the total cost. Okay. So here the price of car. What we will write? Price of car, and price of car is rupees 7,78,415. The price of apartment. So the price of apartment is rupees. The price of apartment is rupees 75 lakh. Wait a minute. 75 lakh 45,900. Okay. So which is the smallest number here? 7 lakh. So we will round up both the number to nearest. Tell in the live chat. We will round up both the number to nearest lakh. Okay. In 778,415, we will round up both the number to nearest lakh and it will become 7 dot. Okay. So which is the just previous number? 10,000. So here 10,000 digit is equal to 7, and since 7 is greater than 5, therefore this number rounded off to 8 lakh. Add 1 in dot digit. Okay. अगर वो 5 से greater है तो add 1 in dot digit. So I have added 1 in dot digit and it has become 8 lakh and all the rest has become 0. 7 has become 8 and all the rest has become 0. Okay. Similarly in 75 lakh 45,900,
we are rounding off this digit to nearest lakh. So I have mark on the lakh digit. And which is the just previous digit? Here, 10,000 digit. 10,000 digit is 4. And since 4 is less than 5. Okay. If 4 is less than 5, then round off this number to the dot digit will be as it is, and it will be rounded off to 75,000,000. That is 75 lakh. Okay. And what will be the estimate cost? 8 lakh plus 75 lakh, and it will become 83 lakh. So finally, I will write the line estimate cost for Arpit is 83 lakh. ये मैंने डायरेक्ट लिखा है, बट आपको प्रॉपर आंसर लिखना है, ठीक है, जैसे कि स्कूल में मैंने लिख के बताया था। ओके, समझ में आ गया सभी लोगों को ये क्वेश्चन? अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इन 2024 there were about 60,98,876 people who visited Taj Mahal in Agra. Okay, the number was about 48,79,989 in 2023. Estimate the difference of the number of visitor in both the year by rounding off both the number to nearest lakh. Here it is given that we have to round off both the number to nearest lakh. Okay, we have to round off both the number to nearest lakh. तो दोनों नंबर को नियरेस्ट लैक में राउंड ऑफ करना है। गिवन होगा तो जो गिवन है उसके हिसाब से अपने को राउंड ऑफ करना है, ठीक है। तो यहाँ पे कैसे लिखेंगे अपन? नंबर ऑफ विजिटर्स और पीपल विजिटेड ताजमहल इन 2024। पीपल एक सेकंड, पीपल विजिटेड ताजमहल in 2024. People visited Taj Mahal in 2024 are 60,98,876. Okay, and people visited Taj Mahal in 2023. 2023 data is also given. People visited Taj Mahal in 2023. The 2023 data is 48 lakh 79,989. ओके, ये लिखने की प्रैक्टिस करते जाओ, सॉल्व करते समय, प्रैक्टिस करते समय। ओके, एंड वी हैव टू कैलकुलेट हाउ 2024 visitors are greater or more than the previous year. Okay, हाँ, right, we have to find the estimate difference of the number of visitors. So here we have to round off both the number to nearest lakh. So I will write the line round off both the number to nearest lakh. Rounding off both the number to nearest lakh. So in first number is 60 lakh 98,000. 60,98,876. ठीक है, लैख डिजिट कौन सा है? 0 है। प्रीवियस डिजिट कौन सा है? 10,000. तो हियर 10,000 digit is 9, and since
9 is greater than 5, add 1 in dot digit. So it will be rounded off to add 1 in dot digit. It will become 61 lakh. Okay. It will become 61 lakh. 60 लाख नहीं बेटा, 61 लाख आएगा ये, ठीक है। एंड नेक्स्ट डिजिट कौन सा है, इसलिए मैं पूरा सॉल्व करके बता रहा हूं, क्योंकि मुझे पता था आप 10 लाख पे राउंड ऑफ करोगे। 48 लाख, नेक्स्ट डिजिट कौन सा है, 48 लाख 79,989, which is the lakh digit 8, which is the lakh place. This is the lakh place and it is present at the lakh place because we have to round up it to nearest lakh. Okay. And which is the previous digit, 7, and 7 is greater than 5. Okay. How we are going to write here? Here 10,000 digit is 10,000 digit is 7, and since 7 is greater than 5, then this number will be rounded off to add 1 in dot digit. अगर 5 से ग्रेटर है या फिर 5 है तो ऐड 1 इन डॉट डिजिट में 1 ऐड करूंगा तो ये क्या हो जाएगा 49, एंड प्रीवियस डिजिट विल बिकम 0. ओके, प्रीवियस डिजिट विल बिकम 0, तो ये आ जाएगा 49 लाख. ये क्या आ जाएगा 49 लाख. तो व्हाट विल बी द एस्टिमेट डिफरेंस, 61 लाख माइनस 49 लाख. एक सेकंड, हैंग हो रहा है काफी ज्यादा. estimate difference is 61 lakh minus 49 lakh, and it will become 12 lakh. Okay, everyone understood today's class? And the MCQ is there. We have solved that MCQ in the class, but still we will take that MCQ again. You have to tell me for which of the following sum or difference the best estimate is greater than 12,000. We have to find the best estimate which is greater than 12,000. Okay. Option number A is 6677 plus 3589. Now you can solve directly. Okay. The smallest number has highest place value 1000. So we will round up both the number to nearest 1000, which is the just previous number 6. 6 is greater than 5, and here 5 is equal to 5. So add 1 in dot digit. In both the cases, the number is either 5 or greater than 5. So add 1 in dot digit. Okay. So if I add 1 in dot digit, what will it become? The number will become 7,000. And here, if I add 1 in dot digit, the number will become 4,000. And 7,000 plus 4,000, it will become, here the estimate sum is 11,000. Okay. Here the estimate sum is 11,000. And is the estimate sum is greater than 12,000? No. So first option will be cancel out. So we will check the option number B. In option number B, what is given? 78,203 minus 67,508. ओके, तो यहाँ पे हाईएस्ट प्लेस वैल्यू क्या है दोनों नंबर की? स्मॉलेस्ट नंबर, मतलब डिजिट्स बराबर है तो स्मॉलेस्ट नंबर ने बोथ द नंबर हैव सेम डिजिट, and highest place value up to 10,000. So we will round up this number to nearest 10,000. तो यहाँ पे डॉट डिजिट का प्रीवियस डिजिट कौन सा है? डॉट डिजिट का प्रीवियस डिजिट 8 है, तो 8 is greater than 5, add 1 in dot digit, it will become 80,000. अब ये आपको बताना है कि ये क्या हो जाएगा.
बताओ जल्दी से। क्या होगा? 70,000. Yes, because 7 is greater than 5, and if 7 is greater than 5, add 1 in dot digit and it will become 70,000. So what is the estimate difference? Estimate difference. Why? Because we have to take difference here. Estimate difference is 10,000. So is this estimate difference is greater than 12,000? Is this estimate difference is greater than 12,000? No, it is smaller than 10,000. So option number B is also eliminated. Option number B is also eliminated. Okay. Option number B is also eliminated here. So we will see the option number C. In option number C, what is given? Wait, let me check the textbook. In option number C, 1100, 244 plus 3507. So we will round up both the number to nearest. We will round up both the number to nearest. Tell everyone. 100,000 or 10,000. क्या आएगा आंसर? The smallest number has highest place value 1000. So we will round up both the number to nearest 1000. ठीक है? We will round up both the number to nearest 1000, which is the just previous digit of the dot digit 2, and 2 is less than 5. Keep the dot digit as it is. Okay, keep the dot digit as it is, miss. It will become 11,000. And here also, which is the previous digit of dot digit 5, and 5 is equal to 5. So add 1 in dot digit, it will become 4,000. Okay, it will become 4,000. And what will be the estimate addition? What will be the estimate addition, everyone? The estimate addition will be, आपको बताना है, बताओ जल्दी से. 15,000. Very good. The estimate addition will be 15,000. So this estimate sum is greater than 12,000. Yes or no? This estimate sum is greater than 12,000. Yes or no? The estimate sum is greater than 12,000. It means that option number C is correct. Option number C is correct. Okay. तो एमसीक्यू था, इसलिए आप यहाँ पे डायरेक्ट जितना तेज आंसर निकाल सकते हो. ठीक है. But when the question come for a 4 mark, 5 mark, you have to write the proper answer, and the proper answer I have provided you. प्रॉपर आंसर आपको दिया है कि प्रॉपर आंसर आपको कैसे सॉल्व करना है. ठीक है, जैसे कि यहाँ पे गिवन है, ऐसे आपको प्रॉपरली लिखना है. दिस इज द प्रॉपर आंसर ऑफ एस्टिमेट क्वेश्चन, क्योंकि यहाँ पे कंफ्यूजन नहीं होगा. ठीक है, माइनर मिस्टेक नहीं होगी, कंफ्यूजन नहीं होगा, एंड आप इजीली सॉल्व कर पाओगे. सभी लोगों को आज का सेशन समझ में आ गया? हैव यू ऑल अंडरस्टूड टुडेस सेशन? Okay, so all the best for upcoming exams FA1, FA2, and I hope you guys do well, and I wish all you happy Friendship Day. So ठीक है, we will meet tomorrow morning, and all the best everyone. Okay, सभी लोगों को all the best.
ठीक है, तो सेशन खत्म करें। पूरा चैप्टर समझ में आ गया? ठीक है, तो प्रैक्टिस करो अच्छे से क्वेश्चंस की, एक्सरसाइज के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो अच्छे से, सॉल्व करके देखो, रफ बुक के ऊपर लिख के देखो, लिखा करो। सेम टू यू एवरीवन, बाय एवरीवन।